Uh, Kritika, it's over to you. Freedom is never dear at any price. It is the breath of life. What would a man not pay for living? As quoted by Mahatma Gandhi. Freedom is the most fundamental thing in life, and that cannot be valued in terms of money. A person can do anything to achieve independence for his country. Independence of motherland is as equivalent to the independence of the entire countrymen. Good morning, respected teacher and my dear friends. At first, I would like to wish you all a very happy 75th Independence Day 2021. Today, we all gather here to celebrate with great gaiety and favor to acknowledge our privilege of being born in free India and celebrate the 74th Independence Day of our country. In the span of these 200 years before 1947, Indians had to suffer from endless pain that were caused by the Britishers. British rulers did racial discrimination, political and social oppression, execution of crowds that rebelled, and many more such evils. After such struggles, sacrifices, and continuous hardship, our freedom fighters were able to overthrow the faulty ruling system of Britishers. After the struggle of almost 200 years, on the dawn of this day, 15th August, exactly 74 years ago, India was freed from the shackles of foreign rule. Freedom is never voluntarily given by the oppressor. It must be demanded by the oppressed, as quoted by Martin Luther King Jr. Freedom fighters struggled to make our country free from the Britishers and sacrificed their life for the country. They devoted their entire life for the freedom of our country. As a result of their struggle, India got independence from British rule. Hence, in this day, we not only celebrate our independence, but we also honor to those who fought for it, to the ones who held a prospect for our country, and to the ones who sacrificed themselves for our motherland and dedicated their life in the battlefield for India's independence. We tribute our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Sardar Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, Chandrasekhar Azad, Lal Bahadur Shastri, Sukhdev, Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Khudiram Bose, and all. Our visionary freedom fighters collected a diversity of worldviews to forge a common national courage towards one direction. They were given away to the cause of liberating Bharat Mata from outrageous and tyrannical foreign regime and ensuring the future of our children. Their intention and actions built the identity of India as a modern nation. We gained freedom when we had paid the full price. The preservation of freedom is not the task of soldiers only. The whole nation has to be strong, as quoted by Lal Bahadur Shastri. I would like to say that we are fortunate to be an Indian and live freely as proud citizens of our country. So let's celebrate today with great enthusiasm and exuberance. I would request Samar to come up and recite a beautiful poem dedicated to the country. जब तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का यह प्यारा देश है, जियो और जीने दो को सबका देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। थैंक यू। Now, I would request Akshita to come up and present her melodious voice with a song. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू।
ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। Thank you. Now we have Anurag to recite a beautiful poem devoted to our nation. দিকে দিকে আজ বাজিছে শঙ্খ মাঙ্গলিকের গান, ঘরে ঘরে উড়ে জাতীয় পতাকা, গর্জে বিদাঘান। তবু কেন হয় অশ্রু সজল, পরাণ ঘুঘুরি কাঁদে, কত Anurag, গৃহে। can you be a little louder and can you start from the beginning? Yeah. দিকে দিকে আজ বাজিছে শঙ্খ মাঙ্গলিকের গান, ঘরে ঘরে উড়ে জাতীয় পতাকা, গর্জে বিদাঘান। তবু কেন হয় অশ্রু সজল, পরণ ঘুঘুরি কাঁদে, কত গৃহে আজ বিষাদের ছায়া, হারায় সোনার চাঁদে। শত শহীদের স্মরণ করিয়া করি প্রাণ ভরে নমস্কার, 15ই অগস্ট তাহারা দিয়েছে জাতিকে পুরস্কার। থ্যাংক ইউ। I would like to present the melodious voices of Shotru and Sneha with a duet song. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कही हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। हाँ मेरी जमीन अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। हाँ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओह ओह ओह। सरसों से भरे खलियान मेरी, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। हो वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओह 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 ओह।
Thank you. We would like to come to an end of our celebration with a beautiful poem recitation by Rohan. Better than heaven or Arcadia. I love thee, O my India, and thy love I shall give to every brother nation that lives. God made the earth, man made confining countries, and their fancy frozen boundaries, but with unfound boundless love. I behold the borderland of my India, expanding into the world. Hail, mother of religions, lotus, scenic beauty, and sages, thy wide doors are open, welcoming God's true sons through all ages, where Ganges, woods, Himalayan caves, and men dream God. I am hallowed, my body touched that sod. Thank you. As we are the youth generation, it's our duty to serve the nation and keep up the legacy of doing something great for a following generation, and we shall make it. Let's all work together for the growth and development of our motherland and make every possible effort to restore the lost kudos and majesty and take our country to the superior rank in the League of Nations. Thank you all. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. I would request everyone to stand up and conclude our celebration with the national anthem. Thank you. Thank you, Kritika, and thank you all of you for the very lovely rendition of the program. I switch off the recording mode, Kritika. It's over, right? Okay. Then I'll go ahead with some discussions.